Assalamu alaikum. Book 4, New Oxford Modern English, Unit 9, Beauty and the Beast, Part 1. इसकी हमने रीडिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी. अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और ये तमाम एक्सरसाइज. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए. How many characters are in the room at the start of the play? Who are they? There are 7 characters in the room at the start of the play, and they are the merchant and his 6 children. The 3 of his children are boys and the other 3 are girls. The names of the boys are Jack, Joseph and George, whereas the names of the girls are April, June and Beauty. Question B है, what work does the merchant do? The merchant runs a warehouse. He imports goods and sells them in his warehouse. Question C. Who is the most hardworking of the children? His youngest daughter, Beauty, is the most hardworking of his children. She is always seems busy in the domestic chores. Question D है, what is the first misfortune that the family suffers? पहली बदकिस्मती क्या हुई थी इस खानदान के साथ? The family suffers their first misfortune when the warehouse catches fire and all its goods are reduced to ashes. Question F है. Question E. What is the second piece of bad news for the family? दूसरी बुरी खबर क्या थी इनके लिए? They receive the news that the ship with their new goods for warehouse is lost at sea. Question F है, where do the sons and the father go and why? They go to find some work somewhere else. George joins his father and Joseph joins his elder brother Jack. Question G है, what do June and April ask their father to bring them? इसका आंसर नोट करें. They ask their father to bring clothes and jewelry upon his return. Question H. What does Beauty ask her father to bring? Answer. She doesn't wish anything in particular. She just wishes his safe return, and if he wants, he may simply bring a rose for her. Question I. What makes the beast angry? The entry of the merchant and his son in Beast's castle and the merchant's picking a rose without his permission from his garden makes the beast angry. अब हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे more difficult. What was the reaction of the 3 daughters when they heard the news that the merchant's goods had been lost at sea? What does this tell us about them? On the whole, all 3 of them were sad, but for different reasons. April and June, the 2 elder daughters, were sad for their clothes and jewelry. Beauty, the youngest daughter, however, was sad for her father's loss. Their reactions tell us a lot about their characters. The elder 2 are quite selfish, whereas the youngest is sincere.
क्वेश्चन के इन व्हाट वेज इज ब्यूटी अ गुड पर्सन? इसका आंसर नोट करें. Beauty is very sincere and kind-hearted. She serves his father as an obedient child and does her domestic chores as a responsible person. She is not selfish like her sisters. All in all, she is a very good person. Question number 2. Which of these statements are true? The merchant had 3 daughters and 3 sons. True. The merchant stored only vegetables and fruits in his warehouse. False. Beauty made tea for her father because he was thirsty. No, it is false because वो thirsty नहीं था, थका हुआ था. Jack agreed to go with his father. It is also false. George जाना चाहता था. The merchant and his son found a castle in the forest. True. Answer the questions about these lines from the play. Yes, yes, if I return and if I have some money. इस लाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं. Who speaks these words and to whom? The merchant speaks these words. He speaks them to his elder daughters, April and June. Question B है इसका. Where is the speaker planning to go and why? He is planning to go somewhere else to find some work and earn some money. Question C है. What is the speaker promising to do? He is promising his elder daughters to bring clothes and jewelry on his return. Question D है. What does the speaker say after this and to whom does he address his words? He addresses his youngest daughter Beauty and asks her to tell him what would she like him to bring for her. अब हम करेंगे ये चैलेंज क्वेश्चन. Do you think June and April are hardworking? Give reasons for your answer. No, they are not hardworking. They are talkative and are jealous of their youngest sister Beauty. They talk about her negatively and do not take any interest in serving their father or doing domestic works of any sort. All they are interested in are new clothes and jewelry. अब हम करेंगे एक्सरसाइज बी. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच हैव द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग. ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स स्टोरी में मौजूद हैं और यहाँ पे इनके क्लूज भी दिए गए हैं कि ये किस तरह स्टार्ट होते हैं. जैसे ये ओ है, टी है, एस है. तो प्रोसेसिंग इसका मीनिंग है ओनिंग. गिमिक ट्रिक चाल. सिक्योर सेफ. स्टोर रूम वेयरहाउस. एशेज सिंडर्स. हार्डशिप डिफिकल्टी. एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 2 है. फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड. इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम ये क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करेंगे. तो ये है रीड द क्लूज नंबर 2 to 6. 2 से लेकर 6 तक इन क्लूज को हम पढ़ते हुए यहाँ पे वर्ड्स फिल करेंगे. फाइंड अ वर्ड इन द प्ले विद द लेटर बी इन इट. राइट इट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्रॉसवर्ड. ग्रेट इस लाइन में जो नंबर 1 लाइन है ये बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड प्ले में से लिया गया है ब्यूटी. राइट अ क्लू फॉर द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड 1. यहाँ पे नंबर 1 में
हमने जो लफ्ज़ है वो पी से स्टार्ट करना है, प्रोबेबली, और इस तरह लिखना है कि ये बी इसके अंदर फिट हो जाए, ब्यूटी का। नंबर 2 है टू ट्रीट मर्सीफुली, ये इसका मीनिंग है स्पेयर, यानी ये स्पेयर का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। टू हैव द मनी और मीन्स टू डू समथिंग, तो ये मीनिंग है अफोर्ड का। वेल्थ एंड रिचेस नंबर 4 में है ट्रेयर। अ कंफ्यूज्ड नॉइज, commotion, not beautiful, displeasing to the eye, ugly। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रीफिक्सेस, साबके कहते हैं जिसको उर्दू में, और ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ अगर हम यू एन यानी अन लगा दें तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे हैप्पी खुश, और अन लगा के अनहैप्पी ना खुश बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको भी हमने इसी तरह प्रीफिक्स लगाने हैं, उनके साथ अन लगाना है या डिस लगाना है। जैसे ये एग्जाम्पल है काइंड, अनकाइंड, मेड, अनमेड, लकी, अनलकी, डन, अनडन। तो इसी तरह इनको वहाँ तो अन लगा है सबके साथ, लेकिन यहाँ पे अन और डिस के साथ हमने बनाने हैं। हैप्पी, अनहैप्पी, एग्री, डिसएग्री, प्लीज, डिसप्लीज, appear, disappear, believe, disbelieve, allowed, disallowed, appoint, disappoint, clear, unclear, attached, unattached, satisfy, dissatisfy, honest, dishonest, able, disable, limit, unlimited, limited है ये unlimited, certain, uncertain, educated, uneducated। अब हम करेंगे क्वेश्चन ये जो है सी, इसका पार्ट 1। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं, इसके अंदर अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, यहाँ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है। से वेदर दे आर यूज्ड एज वर्ब्स आर एडजेक्टिव्स, और ये बताना है कि वो किस तरह यूज हुए एज अ वर्ब या फिर एडजेक्टिव के तौर पर। इफ दे आर यूज्ड एज वर्ब्स, अगर वो वर्ब के तौर पर यूज किए गए हैं तो पुट अ सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, तो फिर जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो वर्ब यूज हुआ है उसको हमने सर्कल करना है। इफ दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, अगर वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज किए गए हैं तो उस नाउन के गिर्द हम ये ऐसे बॉक्स बनाएंगे। One day I saw a man reading a book, तो इसमें रीडिंग को अंडरलाइन करें क्योंकि ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब बुक के लिए यूज हुआ है एज अ वर्ब, तो इसको हम बुक को सर्कल कर देंगे। I saw another man painting a wall, इसमें पेंटिंग जो है वो वर्ब है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एज अ वर्ब वॉल के लिए यूज हुआ है, तो वॉल को हम सर्कल करेंगे। द मैन रीडिंग अ बुक वॉज स्टैंडिंग अप, रीडिंग को अंडरलाइन करें और स्टैंडिंग को अंडरलाइन करें, और ये जो बुक है इसको सर्कल कर दें। द मैन पेंटिंग द वॉल वॉज स्टैंडिंग अप टू, इसमें पेंटिंग जो है वो वर्ब है और स्टैंडिंग भी वर्ब है, लेकिन ये वॉल जो है वो इसके लिए यूज हुआ है, ये दोनों वर्ब्स, तो इसको सर्कल करें। द मैन रीडिंग अ बुक वॉज यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो यहाँ पे रीडिंग बुक के लिए यूज हुआ है एज अ वर्ब, लेकिन ये मैग्नीफाइंग जो है वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है ग्लास के लिए, तो इसको हमने ऐसे बॉक्स बना देना है इसके। The man painting the wall was using an old rotting brush, यहाँ पे जो पेंटिंग वर्ब है वो यूज हुआ है वॉल के लिए, इसको सर्कल करें, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। यहाँ पे यूजिंग
एन ओल्ड यूजिंग वर्ब है, लेकिन ये जो रॉटिंग है ये एडजेक्टिव है, ये ब्रश के लिए यूज हुआ है, तो इसको अंडरलाइन करते हुए इसको हमने बॉक्स बनाना है। सडनली आई सॉ फ्यूरियस डॉग रनिंग टूवर्ड्स देम, तो इसमें रनिंग एज अ वर्ब यूज हुआ है देम के लिए, तो ये सर्कल करेंगे। द मैन सॉ द डॉग अप्रोचिंग देम, यहाँ पे अप्रोचिंग जो है वो एज अ वर्ब देम के लिए यूज हुआ है, तो देम को भी सर्कल करेंगे, इसको अंडरलाइन। दे बिगेन टू रन लीविंग देयर थिंग्स ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे लीविंग जो है वो एज अ वर्ब थिंग्स के लिए यूज हुआ है। और ये जो लास्ट वाला द डॉग वेंट टू स्लीप, इसमें किसी को भी अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ही नहीं है। एक्सरसाइज डी, ये ऑरल एक्टिविटी है, ये आपको आपकी टीचर क्लासरूम में करवाएंगी। एक्सरसाइज ई है कॉम्पोजिशन, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्रेंड, ट्राई टू डिस्क्राइब ऑल ऑफ हिज और हर फीचर्स, फेस, नोज, आइज, हेयर, इनको आप डिस्क्राइब करते हुए अपने फ्रेंड के बारे में लिखें। तो आइए यहाँ से नोट करें और इसको जो आप लिखेंगे उसको ड्रा करने की भी कोशिश करें। माई फ्रेंड हैज़ जेट ब्लैक हेयर एंड अ समवट वाइट forehead. His eyes are light brown and he has a small stubby nose. His lips are full and his mouth can be called medium-sized. He is heavier than me but shorter in height too. That gives him the appearance of being a little chubby. His color is fair and he parts his hair on the side. His teeth are white but he does not have a pretty smile. I don't know why. तो ये कंप्लीट हो गया आपका यूनिट 9। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके आइंदा आने वाली वीडियोस भी हासिल करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।